session we are going to I'm going to explain you guys what should be the structure of your equity research report writing. So in yesterday's session, in the previous session, I taught everyone what are the things that you should consider while you guys are making an equity research report. And in this session, I will give you a structure of it. Just a second, let me present my screen to all of you. You guys can see my screen now? Yes. On WhatsApp, so just a few minutes back, I shared many links with all of you guys. You guys must have seen this, right? In the WhatsApp group, please, open your WhatsApp group. Yes, sir. Please open this equivalent for 21st of March WhatsApp group. So there you have this equity research report writing guidance, then video 1, video 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 links are given here, plus one PPT is given there. So this PPT I used, to explain what we are actually looking for while we are going to analyze any company, any stock. So what are the things that we mainly discuss? We mainly follow. What is the structure basically? So the framework, it is already there in this PPT. Plus I have shared some good quality reports. It is by Prabhudas Viladhar. It was on Affle India. Then this was by HDFC Securities on Route Mobile. This was by MK Global on Route Mobile. And this is a very basic quality report. Although I made it almost 1 year ago. But this report is on JSW Steel. You guys have to read it later on. And you guys have to make it, this is like, 3 out of 10 kind of a report. The quality of this report is only around 2.5 to 3 out of 10. This is a very basic, poor quality report. So this is just to give you an idea how we approach it. Ekdam very basic report is this. But while you guys will be working, so you guys will have to do it at least till 6-7 point out of 10. That much report तो आप लोगों को बनाना होगा. So we are going to guide you guys regarding that. So let me now share few more things with you guys. What I have got here. Okay. So this is one report on IGL, Indraprastha Gas Limited, initiating coverage report. Can you guys see this writing here? Yes. So, is there anyone who has ever made any equity research report so far? The quality doesn't matter. Is there anyone who has attempted to make at least one report? Sir, usually I'm a PGPM student from IBS Mumbai. So there's a club, Kautalya named. We used to create a fin sheet in which we make this equity research analyst considering EIC analysis on the first 2 page, then with the fundamental, and then with the technical analysis. And at last, we present with the conclusion. So it's about a 10 page, and basically from last 1 year, we made on 8 to 9 sectors equity research analysis. Anyone else? Sir, can you please repeat your question? Is there anyone who has made equity research report so far? The quality doesn't matter. At least you. Is there anyone who has attempted to make one equity research report? Actually, Sir, I have not made any equity report as on yet, but I have done technical analysis and fundamental analysis of the stock. I am talking about equity research report. sir, I will submit within 2 to 3 days, sir. What exactly I have to do, sir? What is the topic or the content, sir? Talk about layout and You asked everything. this question post the class, right? You just joined yesterday, I think, right? Okay, sir. You Sure, sir. call me after this class is over, so I will share all those things. Okay, sir. Sure. Okay, Sure, sir. so as far as this batch is concerned, I am not seeing anyone having any experience on writing equity research report. And candidates who were there in yesterday's class at least had a basic idea
of how we are actually doing it. So in this session, just I'm going to give you a very brief structure of it, so you guys can watch it. So this is on IGL, initiating coverage report. Now what is this initiating coverage report is that? That means we are initiating, that is we are starting coverage on any company. Okay. So this is an old report, so the data are mentioned over here in this report is going to be past data, not the current one. But yeah, this is actually a buy side report. You guys can see it. So this kind of reports, initiating coverage report, it is when you are interested in any stock. You had your screening, criteria. So let's say the ROE should be more than 15% like that. It should not have a negative EPS, negative cash flow. It should not have like that. You may have your own criteria, right? So cash flow from operations, it should not be, let's say, in negative like that. You had your own criteria. It should be a free cash flow generating company like that. You can have your screening criteria. The management, at least the business should be 10 years old, like that. You can have your own screening criteria. So almost 5,500 companies are listed on BSE, right, everyone? So out of Yes, this sir. 5,500 odd number of companies listed on BSE, what is the actual investable universe? That is, well, if you invest, you at least have your money safe. It is in safe hands, right? Because you are giving your money to the promoters, but if you do not know what is the quality of the promoter, then so you are going to lose the money. Because there, in equity analysis, there are few, 3-4 basic principles that we always keep talking about is that if the business is good now, but the management is worse, then it is going to collapse. So what could be the example of it? I'm talking about basic promoter analysis. So good business and bad management. What could be the example of it? Anyone try to give an example? Think about it. Good business but bad management. Yes Bank, DHFL. Isn't it the Reliance Industries. no? I said good business, bad management. Do you think Mukesh Ambani is a bad management? No, sir. On the side of Neil Ambani. Adila. Okay, fine. Anil Ambani, sir. The Reliance Capital. Reliance Capital, my bad, sir. Okay. Reliance Power is also an example. Reliance Capital was there. Okay, all right. Arcom was there. Okay. Now bad business and bad management. Any example? Bad business and bad Kingfisher. management. Kingfisher, correct. So the airlines business. Also, you had this, Naresh Goyal's example, right, of this Jet Airways. Business is not a safe area to invest. This airlines industry. So, bhai, आपका business is also bad. You also have your bad management. So this is one thing. Now, good business and good management. What could be the example? So Tata. spaces, Tata. Tesla. Tata are invested into, let's say, see, this Air India thing, bad business and good management. This is Air India plus this Vistara, all those stuff, right? Achha, bad business but good management. Indigo is there. Good business and good management. HDFC is there. Then your TCS is there. Tata Steel is an example of kind of bad business and good management. Even the steel business is not a very much safe business, especially this commodity cycles and all those stuff. And even this oil marketing companies also, they I personally do not consider them as a good business. It's very difficult. The capex you require, the kind of technology you require, and the kind of marketing you require is very difficult. So anyways, this company is IGL. Just let me show you how it is done. So whatever companies you guys are going to cover, just a brief introduction you give on the very first page of it. Okay, here India gas utilities, right? So here you can write the full name of it. Then you guys don't have to give this kind of buy, hold or sell rating. Okay, we're not expecting this kind of ratings or targets from your side. You can mention the current market price, then market capitalization of the company, shareholding pattern you can mention like that,
price performance, if you want, you can give like 3 months, 6 months, 12 months, and last 5 years price performance, you can give it like that. Number of shares outstanding, it is not required. Then in the very first page, so okay, let me first make it clear, what is the purpose of making one equity research report? Can you please tell me what is the purpose of making an equity research report? By looking at the report, even a layman should understand what is the business, how it is performing, and whether it is investable or not. Besides that, So- it also talks about the shareholding pattern of the company, sir. What are how the company is performing on different parameters, sir? As you talked Provide about. Where we can get all this data that you guys are mentioning, even a layman should understand what is happening in a company, what this company is all about, how this company makes money, all these things should be there, right, in your equity research report. So let me just show you once again what are the documents, what are the things, materials you must refer. Let me just run this video for you guys. तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको जरूर पढ़ने चाहिए। नंबर 1 इज एनुअल रिपोर्ट। किसी भी कंपनी के पिछले 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए, और अगर पिछले 3 सालों के एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस कंपनी ने डीआरएसटी प्लस पिछले जितने भी सालों के एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगे वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट और कुछ कॉन कॉल्स आपको खुद से सुनने भी चाहिए। इसके साथ साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रिपोर्ट्स प्लस ब्रोकरेज हाउसेस एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स के सेल्फ साइड रिसर्च रिपोर्ट्स प्लस सेक्टोरल रिपोर्ट्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए। One eternity later. Okay, so the purpose of this video was to tell you guys what are the documents that you must refer to, right? So many documents were mentioned over there. At least 3 years of annual report you guys should read, right? So who's there who reads at least 3 years of annual report? Is there anyone who has ever read 3 years of annual report ever? Of any company for that matter? Is there anyone who has ever gone through 3 years of annual report on any company? Okay. Anshika Singh, she has gone through. Anyone else? Anyone else? 3 years के एनुअल रिपोर्ट किसने रीड किया है अब तक? 2 years of Dabur, Akash Rathod. Anyone else? So 3 years का अगर आप लोग एनुअल रिपोर्ट रीड करते हो, right? So what is the business summary of it? So what has happened in last 3 years? That should be a part of your annual, equity research report over here. मतलब last 3 years में whatever has happened, the summary of it should be written over here in the very introductory part of the report. Here you should mention what the company does, how this company makes money, and what are the major things in that particular business. Let me just share another report with you guys so that it would be very easy to understand for you guys. You guys have brief idea about steel sector, right? So here what I have done is that here I have mentioned how JSW Steel is working, how they are making money, what is their capacity, and at what level of output they want to reach, what is the capex they are making. So matlab basically a basic understanding of it is given here in the very introductory part of the report. So first पढ़ के एटलीस्ट फर्स्ट 1 पेज रीड करके वन इन्वेस्टर मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस एकदम सिंपलिस्टिक वे में. देन यू कैन मेंशन what is the production capacity, highlighting those main areas of the business. Then you can mention operational presence of the company, manufacturing units,
like that. What are the main, as this company is a steel producing company, so they are largely dependent on this, they're largely dependent on this, mining areas, right? And they have this JSW Steel, they, as on today, they have 50% of captive sources. So, uska what is the status of their manufacturing units and their, captive iron ore sources and, coal mines and all those stuff? It is discussed over here. Then the product portfolio is clearly given here. What are the products that they are selling in the market in order to make money? Am I audible? Yes. Yes, sir. Any doubt till this point? No, sir. Yeah. No, sir, continue. Product portfolio. So after you have discussed about the business, what this business has done over the last 3 years period, then you were mentioning what is the product portfolio of it. So let's say if you make a report on TCS, let's say for that matter, कि ये तो आपका हो गया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट का स्ट्रक्चर इज लाइक दैट. तो आपका इफ यू वर्क ऑन TCS, तो उसका आपका IT सेक्टर में व्हाट should be the things in this particular area. Can you guys somewhat explain? अगर TCS के ऊपर आप लोग, if you guys are willing to make a report on TCS, तो what are the things that should be there? This is तो a steel manufacturing company ना, तो TCS तो आपका सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है, उसका what should be the reporting structure? तो try कीजिए please. Industry overview, sir. How Company this का overview. Fundamentals. Fundamentals में we will definitely get into. TCS का overview. हाँ. इस एरिया में what should be there? The segment, geographical segment. Correct. Correct, एकदम. And geographical segment, and also you can mention the product wise segment, right? मतलब उसका आपका की products कौन कौन से हैं, right? माने how much they are into the exposed to the insurance sector, how much to the banking sector, like that. Okay. Product wise also you can give the bifurcations of it, and where you will find it in the MDA section, management discussion analysis. There also you can get an idea, and also मतलब in any annual So report. it's there below the balance sheet P&L also segment Yes, macro accounts bifurcation. में also it will be there, हाँ. Okay. right? आपका this one is of HDFC. Here it is C. Yeah, it is given here. I was reading the annual report of HDFC. Actually, I was reading about it long time back. So see, micro MSME sector, उसमें how much exposure they have, it is given here, na? See, your bank's advances to the micro enterprises alone stood at 60,846.03 crores, right? MSME segment में how much exposure they have? Then see, loan disbursement, इसमें कितना they have exposure? Then, so here it is director's report, and under director's report section, it is their MDA section. So there all the verifications are given here, but also in the, let me show you few more numbers. Agricultural and allied activities, यहाँ पे how much exposure they have? HDFC have 94,977.14 crore rupees का exposure they have. So if the agricultural activities goes really bad ना, तो this loan book का यहाँ पे they would see some kind of tension, right, on this particular area. अगर let's say the monsoon is not performing well, अगर monsoon ठीक ठाक नहीं हुआ इस particular FY में आपका FY23 में, so this particular loan book it can come under stress, right? So this is why this segment wise आपका revenue का reporting also is very very important. Here you can get it, or to the notes to accounts also you can get it. Notes to accounts मतलब आपका let me just show it in a very easy way. Notes to accounts का, actually all these things I have clearly discussed in
We have videos of it. I have shared all the links. GSPL Canva report. Let me just show you. Yeah, investment non-current. Let me just show you. It would definitely help you. This was assets. All these notes to accounts now, you guys have to go through it. So how to go through it, how to interpret, how to analyze what are the things is very important. We have separate videos on it, and I have already shared the links in the group. Today in the morning, I have shared all the links. Matlab, step by step कौन से videos you must refer. All those I have shared already. Let me just show you what I am trying to mean. Yeah, statement of profit and loss. यहाँ पे you have revenue from operations less GST recovered less captive sales for own projects. तो आपका note number 32. If you refer to note number 31 ना, so how much is from the steel business, how much is from the power generation business, it is clearly given there. And this company is mainly focused in India, तो इसका ज़्यादा bifurcations won't be given there, but yeah, definitely the segment wise revenue will be given there. Let me just take you there. 31. Revenue from operations. Yeah, just a second. Okay, revenue from operations. You can see it ना कि iron and steel से how much is there, power generation से how much is there, then other operations से कितना आपका revenue contribute हुआ है, right? So out of these three businesses, right, these three particular segments, which is the key revenue driver for this particular steel company, Jindal Steel and Power? This particular Iron and steel, sir. company. Iron and steel. Yeah, Iron this steel particular is standing at 4164. अच्छा, now see आपका domestic business से how much, from export business how much revenue? It is It's total 362 crore. Sure. right. So Right. like that, you guys have to read each and everything in the annual report and इसका key revenue drivers. What do I mean by this key revenue drivers? आपका European Union, you guys were doing it so much, right? तो यूरोप के साइड से how much revenue it is driving versus आपका US के साइड से how much revenue is driving for आपका TCS का. So if you get it कि भाई आपका particular US का business से this much let's say US business का आपका CAGR चल रहा है let's say आपका 8% का, आपका यूरोपियन यूनियन साइड से आपका यूरोप साइड से आपका कॉन्टिनेंट से आपका रेवेन्यू ड्राइविंग इज अराउंड 2.5% एंड इंडिया के बिजनेस से लेट्स से इट इज 10%. तो विच शुड बी द मोर फोकस एरिया आपका ज़्यादा फोकस एरिया कौन से एरिया में होना चाहिए? इंडिया में, राइट? सो दोज थिंग्स शुड बी देयर इन योर रिसर्च रिपोर्ट कि भाई TCS कंपनी का दिस मच रेवेन्यू आपका लेट्स से यूएस से बिजनेस होता है लेट्स से आपका 40,000 करोड़ का, लेट्स से आपका यूरोप से बिजनेस होता है लेट्स से 20,000 करोड़ का, एंड लेट्स से इंडिया से बिजनेस होता है आपका 10,000 करोड़ का ओनली. ओके, मैं की रेवेन्यू ड्राइवर्स क्यों बोल रहा हूँ? इट इज द मेन कोर ऑफ इट ना, दैट इज द मेन कोर ऑफ द बिजनेस. आपका यूएस से लेट्स से 40,000 करोड़ रुपीज का हो रहा है आपका यूरोप से लेट्स से 20,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस जनरेट हो रहा है, एंड लेट्स से फ्रॉम इंडिया इट इज ओनली 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट? बट दिस यूरोप सेगमेंट इज ग्रोइंग एट लेट्स से 2%. इसका रेवेन्यू आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है ओनली ऑफ 2%. हियर इट इज लेट्स से ओनली ऑफ 5%. एंड इंडिया के सेगमेंट में लेट्स से इट इज ग्रोइंग बाई 20%. ये सेगमेंट अगर 20% से ग्रो कर रहा है तो when you guys will be doing the forecasting of it, तो आपका इसका 20% कितना हो रहा है? आपका इसका 2,000 करोड़ का ग्रोथ आ रहा है, यहाँ पे इसका 4,000 करोड़ का ग्रोथ आ रहा है, राइट? एंड यहाँ पे आपका 2,000 करोड़ का ग्रोथ आ रहा है.
तो नेट एक्चुअली यूरोप का ग्रोथ और भी खराब है, इसको यू कैन मेक इट एक्चुअली ओनली 1 का. यूरोप का बिजनेस इज नॉट रियली डूइंग दैट मच. तो यहाँ पे आप सर कौन पे किस बना जस्ट अ सेकेंड, क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं दिस शुड बी 2 ना. तो नेट आपका ग्रोथ कहाँ पे एक्चुअली, मतलब आपका वायर द ऑपरेशन इज एक्चुअली ग्रोइंग. इंडिया के साइड में तो ऑपरेशन इज एक्चुअली ग्रोइंग ना. तो डोंट यू थिंक दैट कि इंडिया के पर्टिकुलर बिजनेस का ज़्यादा ऑपरेशनल अभी एफिशिएंटली इट इज गोइंग ऑन. Yes, sir. So what I am trying to say is that अगर you have this kind of focus area, मतलब let me just give you another better example of ITC. ITC का have you guys seen it? Cigarette का business it is not growing, it is flat. ITC का cigarette business is flat. Hotel business is under loss. So which particular segment is now growing? Is there FMCG segment? Although the base of the FMCG segment is very low currently, आपका soap का, आपका biscuits का, all those things, आपका that segment is very low. Only this Ashirwad Atta, that particular product is actually growing rapidly. Other than that, the FMCG baskets, base is very very low. But as it is growing now, everyone is looking at the FMCG segment only. आपका cigarette का, they have this taxation का problems, all those stuff, but it has become almost like a monopoly in the market. आपका होटल का business, there are so many issues. Although they are building many properties and they are somehow trying to diversify their business from completely cigarette based play to they have become a conglomerate right now. But still, investors are mainly focused on this particular आपका FMCG का segment, right? If you go and check the news related to ITC, all the analysts, all the investors, they are greatly observing just this FMCG basket. तो इंडिया का भी वैसे ही आपका TCS का अगर आप लोग एनालिसिस करोगे तो भाई पर्टिकुलर आपका कौन सा सेगमेंट से ग्रोथ आ रहा है उसके ऊपर एम्फेसिस आपको करना होगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी द आपका इनपुट फॉर द फाइनेंशियल मॉडल. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन? Yes, sir. कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए प्लीज. सर इनपुट ऑफ द फाइनेंशियल मॉडल, कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस आस्पेक्ट? इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे सर. हाँ, so what we do is that financial model मतलब let's say this is an Excel sheet, right? तो यहाँ पे I explained this in the previous session. तो यहाँ पे let's say you have your numbers for FY21, you have your number for FY22, let's say you have your numbers for FY20. तो you want to know भाई कि आपका यहाँ पे you have drafted profit and loss statement, balance sheet and cash flow statement you have drafted. The statement model is already drafted here. You have already gathered those data from the annual report and it is already there. And आपका annual report का data है, that means it is audited. मतलब आपका this is somewhat reliable, right? 100% accuracy तो we cannot really say, but at least थोड़ा reliable है. But now FY23 में, as this FY23 has already started from 1st of April, FY23 में what could be the revenue? What could be the revenue? What could be the profit after tax? If you want to know it, what is the way of knowing it? Either you can wait for the financial year to finish, but तब तक आपका तो already impact आ गया है, right? And all those potential earnings, it will be already discounted in the आपका share price, right? So you already want to know, sitting here today on 10th of April. 10th of April को बैठ के आप जानना चाहते हो कि इस एंटायर FY में, इन दिस एंटायर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टॉप लाइन कितना ग्रो करेगा, कंपनी का बॉटम लाइन कितना ग्रो करेगा, कंपनी कितना कमाएगा, कितना. सिंपली इफ यू वांट टू डू दिस पर्टिकुलर फोरकास्टिंग ना, देन दिस फाइनेंशियल मॉडल कम्स इन प्लेस. यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम मैनेजमेंट का कॉमेंट्री. इन प्रीवियस सेशन वी इवन वेंट थ्रू वन कॉन कॉल एज वेल. So there we had some kind of an idea, right? So refer to yesterday's session. वहाँ पे if you listen to the con call, you will understand my point. तो यहाँ पे let's say the management is saying कि भाई business आपका 5% से grow करेगा, 5% CAGR से grow करेगा. So you can, when you will be doing the forecasting, so there you can do ना कि आपका top line, आपका revenue 5% से grow करेगा. तो आपका अगर 100 crores का revenue आ रहा है,
तो नेक्स्ट एफआई में दैट कुड बी 105. आपका बॉटम लाइन देयर सेइंग कि भाई रॉ मटेरियल के साइड से थोड़ा प्रेशर है, तो वहाँ पे द बॉटम लाइन कैन ग्रो बाय 4%. तो लाइक दैट यू कैन एटलीस्ट एस्टिमेट, यू कैन मेक एन एस्टिमेट कि आपका पोटेंशियल आपका अर्निंग्स क्या होगा. नाउ आफ्टर द फाइनेंशियल मॉडल इज डन, what you actually come up with, that I am trying to mean this thing. I'm trying to say this particular thing. Total operating income. Can you guys see this thing? Total operating income आपका FY20 का is given there. This E, this is your estimated ना. Yes, sir. It's just Right, sir. Out clear हो रहा है थोड़ा थोड़ा. yes, sir. ये आपका 3 years का आपका फॉरवर्ड अर्निंग्स का यहाँ पे आपका एस्टिमेट दिया है ना. From where they have got this data? सिक्योरिटीज का ये रिपोर्ट है. सो फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट दिस डेटा? दे हैव देयर ओन, दे हैव बिल्ड देयर फाइनेंशियल मॉडल. सो देयर दे हैव इंक्लूडेड ऑल दिस थिंग्स एंड दे हैव कम अप विद दिस नंबर्स. अब दिस एस्टिमेट्स कैन डेफिनेटली गो रॉन्ग. आपका लेट्स से दे आर फॉर अ लेट्स से स्टील कंपनी, दे आर एस्टिमेटिंग कि भाई प्राइस आपका स्टील का प्राइस, आपका हॉट रोल्ड कॉइल का प्राइस लेट्स से HRC, उसका प्राइस लेट से मार्केट में जाएगा 65,000 का पर टन के हिसाब से. बट ड्यू टू वट एवर दिस जियोपॉलिटिकल इश्यूज दैट इज हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड ऑल दिस स्टफ इन द वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में, आपका लेट से आपका ये प्राइसेस फिनिश प्रोडक्ट का प्राइसेस लेट से बिकम्स 80,000. तो 80,000 हो जाएगा फॉर अ कंपनी विद कैप्टिव सोर्सेस. उसका तो टॉप लाइन भी ग्रो करेगा, उसका बॉटम लाइन भी ग्रो करेगा, राइट? This particular point, is it clear to all of you? What I just said. Yeah. अगर डाउट है तो पूछिए यहाँ पे. But within P&L there are a lot of components, right? So Correct. in management or annual report they won't clearly say each and everything. I know for revenue they will say or net profit. But दूसरे कैसे करेंगे? दूसरे components like interest, tax and all. वो भी मिल जाएगा इसमें? Notes to Annual accounts. reports? Yeah, notes to accounts में आपको सब Okay, कुछ. okay. Let me just show you. You have actually asked one very important question. Which is 166, right? Just a second. Let me show you. Let me just show you. Balance sheet. You guys probably so far you guys have only look at the profit and loss statement of any company only on let's say money control or ticker.com, all those student.com and all those sites, right? So on annual report, how it actually looks, actually how to read this entire financial statement, we have made videos on it and it is on our क्या बोलते हैं, our WhatsApp group. We have just shared today in the morning कि कौन-कौन से videos you must go through it. अच्छा, see, this is one I just said कि आपका revenue from operations is given there, but it doesn't say the entire story. भाई revenue from operations आपका 37,000 crores का it is there, written there, but इसका how much from India, how much how much export market से, how much domestic market से, how much Middle East में sales है, how much आपका US countries में sales है, nothing is mentioned there ना. यहाँ पे क्या दिख रहा है? Only revenue from operations. आप पिछले 5 साल का यहाँ पे annual report आप एक financial model बनाइए, आप 1 2 3 4 5 करके आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, बट उसमें ओनली यू कैन हैव द ट्रेंड एनालिसिस कि भाई आपका CAGR लेट से आपका 7% से बढ़ रहा है, दैट्स ऑल. बट आपका पर्टिकुलर कौन सा सेगमेंट ग्रो कर रहा है, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. इफ यू लुक एट द फिगर एज अ होल, यहाँ पे दिख रहा है क्या कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है कि आपका डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स बढ़ा है? कैन यू गेस दिस फिगर? No, sir. नो वे टू अंडरस्टैंड. आपका पावर जनरेशन बिजनेस कितना ग्रो किया है? This company is making capex like crazy. This Jindal Steel and Power Limited. But उसका ये टोटल रेवेन्यू देख के वो पता नहीं चलेगा कि आपका पावर जनरेशन बिजनेस से कितना बढ़ा है, आपका इंडिया के सेगमेंट से कितना बढ़ा है, आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट से कितना इंक्रीज हुआ है. देयर इज नो साइन ऑफ इट. सो दिस इज व्हाई आई रेफर टू नोट नंबर 31. अदर इनकम यहाँ पे दिख रहा है आपका 666.11 करोड़. दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. इतना पैसा मिल जाए मैं भगवान मान जाऊंगा खुद को, राइट? 600 ऑलमोस्ट 700 करोड़, इतना ज्यादा अदर इनकम, एंड लास्ट ईयर इट वाज नथिंग, इट वाज जीरो. दिस ईयर इट हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक 700 करोड़ रुपीज का अदर इनकम है. ये कहाँ से आया?
इसकी वजह से आपका टोटल आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फिगर है यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ये टोटल फिगर आपका इन्फ्लेट हो जाएगा, राइट? इफ यू जस्ट लुक एट दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस टू फिगर्स, दिस इज क्रेजी। इतना डिफरेंस क्यों है भाई? प्रॉफिट में इतना डिफरेंस क्यों है? इट इज मैंने देखिए ओनली 617 करोड़ से 7154 करोड़ रुपीज का आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आपका आया है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसको छोड़ दीजिए। अभी दिस मच ग्रोथ इन प्रॉफिट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कहाँ से पता चलेगा? इफ यू Sir. डू, जी प्लीज। Yeah. So this line 5, the profit and loss before exceptional items and tax has been grown drastically. So sir, can you please explain this one as well? I have explained in the video. We have this video of total income analysis, total expenses analysis. So till this point, where it is, yeah, till Six this one. point we have video. We have made video, and I have already shared the videos links in the group. Go and watch these things. You will get a super idea of it. अच्छा, tax component I have not covered so far because tax component को समझना थोड़ा सा कभी-कभी difficult हो सकता है, and it won't be मैंने uniform for all of you. तो for all the companies तो थोड़ा differentiation रहेगा, इसलिए tax component I haven't incurred there in the videos. तो tax component जितना भी amount होगा उसको आप वहाँ पे जो आपका एनुअल रिपोर्ट में मेंशन रहेगा, so if you just deduct that value, you will get to this profit and loss for the period, right? So इसीलिए as this is very small component, I haven't covered that, but till this point, each and everything, each and every notes to accounts, उसके पीछे का भी notes to accounts I have followed. We have videos for this. So देखिए टोटल फिगर देखोगे भाई इतना ग्रो हुआ है, क्यों ग्रो हुआ है? पूरा यहाँ पे आपको हर एक लाइन आइटम्स को देखना होगा, इसके पीछे का स्टोरी कहाँ से पता चलेगा? व्हाई दिस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हैज कम डाउन। अब देखिए टोटल आपका सेल बढ़ गया है, राइट? आपका टोटल इनकम ही बढ़ गया, आपका टोटल आपका टर्नओवर बढ़ गया, आपके बिजनेस का सेल्स बढ़ गया है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब आपका रॉ मटेरियल का खर्चा घट गया है। ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फिगर है, isn't it? हेलो, Yes, right. बट व्हाट Right, वुड बी द right. रीजन बिहाइंड दिस कॉन्ट्रैक्टेड फिगर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्यों घट गया है? सोचिए, अभी बताइए, सोचिए। External factors may be involved, like favorable extra geopolitical situation. बट स्टील Like के sir, प्राइसेस तो बढ़ गए हैं ना। स्टील के प्राइसेस, द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल हैज एक्चुअली गॉन अप इन द मार्केट। आपका FY20 का है ये, दिस वन इज ऑफ FY20, मतलब प्री कोविड, राइट? द लॉकडाउन टुक प्लेस आई थिंक अराउंड ऑन 24th March 2020 को। So this is pre-COVID. Then this is the COVID time. आपका entire COVID year का hit they had, and this time the prices of steel has gone up like crazy. But आपका raw material, आपका cost of material consumed has actually come down. Why? Any guess? छोटा मोटा guess, कुछ भी? Production effective नहीं है because laborers are not their job because of COVID. No. This is raw material का cost of material consumed. Sir, any kind of subsidy? पुराना रॉ मटेरियल यूज किया होगा शायद। Captive sources के बारे में सुना है? No, sir. नहीं सुना? खुद का business, right? Captive हाँ, businesses, खुद का they माल, own their खुद का माल, खुद अब अपने माइंड से यू आर डूइंग द जुगाड़, दैट इज इट। right. अच्छा, इज देयर एनीवन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA लेवल 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट? इज देयर एनीवन CFA लेवल 1 क्वालिफाइड और चार्टर्ड अकाउंटेंट? अच्छा, CFA लेवल 1 कैंडिडेट एटलीस्ट? नो? So I'm in CA final. अरे ग्रेट, सो बोला कि नहीं आप? So you to understand all these things very well. Yeah, but मेरे को रिपोर्ट मतलब आई अंडरस्टूड, बट वो रिपोर्ट में कैसे रिपोर्टिंग करना ना, मतलब फॉर एग्जांपल अभी दिस यू शोड फॉर कंपनी, अभी इंडस्ट्री में कंपनी वाइज वो देना, मतलब वो मेरे लिए, मैंने रिपोर्ट नहीं बनाना, तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर मी। So see, for making any equity research report now on any company, let's say you are covering steel sector here. After that, we were going to cover banking sector. Let's say if you IT sector, India का IT sector.
work on this. So first, if you do not understand what is happening in the sector, so how can you understand what is happening in that particular company, right? आपका broader perspective, if you do not know what is happening, so then आपका micro level में what is happening, how can you know it? So this is why in the class 3 I mentioned you guys कि to make the sectoral report. This is why I said to make sectoral report. Okay, if you guys haven't met or haven't gone through it, let me show you the videos for it. I already have shared this links in the group. You guys haven't done it. What can I do? Sir, I have watched those videos, for report writing, which you had shared 2 links. I saw that. I have started preparing also, but वो complete नहीं हुआ. So I'll just complete it and share it with you. Do it. सर जो आपने वीडियो शेयर किया वो सर कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में शेयर किया सर? नॉलेज इक्विवैल्यू सर्च और इक्विवैल्यू You सर्च? joined us yesterday, na? यस सर. You call me after this session is over. So I need to send many links to you. ओके श्योर सर, आई विल कॉल यू All आफ्टर other द candidates have मीटिंग. actually got this links, but you haven't got this. ओके सर, आई विल कॉल यू आफ्टर द मीटिंग. On WhatsApp, I will share all the links with you. ठीक है? ओके सर, श्योर सर. So whoever has not gone through it yet, just wait. Let me show you. Yeah, this video. This is particularly for steel sector. If you want to make an equity research, sectoral report on steel sector, this video would be really helpful for you. But not only steel sector, भाई, this is an example कि भाई steel sector में काम कर रहा हूँ तो ऐसा होता है. At least manufacturing companies में you can do it. आपका zinc अगर आप as a sector आप consider करोगे, in India only it is there is Hindustan Zinc. Copper में Hindustan Copper is there. आपका aluminium place में Nalco is there and Hindalco is there and Vedanta मतलब minorly it is there. But those kind of companies also you can cover from this particular video. So these 2 videos are the key. This is industry overview report writing. This video plus first watch this video. Whoever has not gone through it, first watch this video, then this video. That's all. आपका कोई भी सेक्टर इसमें से निकल जाएगा. आपका फार्मास्यूटिकल हो, आपका कुछ भी निकल जाएगा इसमें से. ये 2 देख लीजिए, इसके ऊपर सब काम हो जाएगा आपका. At least not to very advanced level as the equity research analyst and ICICI Securities they are doing. No, not at all. We are not as good as them. They are super good. They are the best actually. So yeah, but at least if you guys watch these 2 videos and work on it, at least 5 out of 10 तो हो ही जाएगा. 5 out of 10 you might be thinking भाई that would be very poor score, but yeah, if you get 10 out of 10 तो then तो you would be senior analyst in ICICI Securities. Those are the guys. But yeah, 5 out of 10 is also too much to say. At least 4 out of 10 तो हो ही जाएगा. इतना I can say. अच्छा. आपने फिर और कौन सी कंपनी उनकी बात की सर? इसके इनके अपनी कंपनी के अलावा जिनका हम चेक कर सकते हैं? क्या? जो भी आपने बोला सर. क्या कौन सा? अभी जो आप बोल रहे थे सर सीनियर, तो उनको कर लोगे तो आप 10 आउट ऑफ 10. वो कौन सी कंपनी बताई सर आपने? ICICI Securities, HDFC Securities, आपका JP Morgan का इक्विटी रिसर्च साइट जो है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च का जो साइट है, क्रिसल का एनालिस्ट. अच्छा, I am mentioning few names ना. I think I have already done it, but once again I am doing it. Please everyone, please write down this 3-4 names. I have said these names many times. Again, write it down. If you want to do anything significant, being an investor or even as an equity research analyst, please write down these few names. Yes sir, kindly continue. Everyone, if you guys are interested in equity research, please write down these few names. They are the people whom you should follow. Not me. I am no one. I am a good investor, but not a good analyst. Yeah, that is the truth. I have only around 2 years of experience in this field as an analyst. Not even 2 years, but yeah, as an investor, I have 7 years of experience. So yeah, I am a better investor, but not a better analyst. For analysis purpose, follow these people. They are the greatest ones. For me, this person is very easily understandable, and I have followed him as an investor, and he is kind of my first guru in the market. So his name is Vasan Maheshwari. Write it down if you guys want it. Vasan Maheshwari. This guy is very simple. His net worth is around 800 crore rupees. Actually, he is from Kolkata,
So when I purchased a book of him, the thoughtful investor. So I had even conversation with his wife because there was some delay in delivery and I had her number, so I called her. मैंने भाई इतना सक्सेसफुल है, देन ऑल्सो सो डाउन टू अर्थ, मतलब सीखना चाहिए उन लोगों से. द सेकेंड वन वुड बी दिस पर्सन सुनील सिंघानिया, Abacus asset manager, company is name Sunil Singhania. He was the chairman of CF Institute for many years, and he was also the CIO of Chief Investment Officer of this Reliance Capital, Reliance Mutual Fund. He used to handle around 1 lakh crore rupees of fund, and his net worth is around I think 3.5 thousand crore rupees right now. Sunil Singhania, genius एकदम. Then Saurabh Mukherjee, I think many of you know, right? Saurabh Mukherjee, who knows about him? Saurabh Mukherjee. I think he is from Marcellus Investment. Correct. If you finish CA and after that if you want to get into the equity research domain or share market, they generally have their opportunity in the firm. They would, if they select you, they would ask you to go through 6 months internship in their firm, and if they like you, then they will hire you in their firm. If you get the job there, super. You won't you don't have to look back ever in your life after that. Their research is so good. Saurabh Mukherjee, then Ramdev Agarwal. Say that much learning I haven't got. Although he is a genius, he is a QGLP formula we are following in our company also. But yeah, these are the people, these three people, Vasant Maheshwari, this Sunil Singhania and Saurabh Mukherjee. I have learned from these three people more. Sir, which formula? QGLP, quality, growth, longevity, price. Quality means quality of the management, quality of the company, quality of the business. मतलब कितना credit में they are doing their business, and how much they are in the banking company. So to whom they are giving credit? What is the credit quality, right? आपका aviation में how much you are how much you are you can manage your fuel price versus your revenue. In telecom RPU, average revenue per user, how much it is. So this is the quality. Growth, आपका growth का percentage क्या चल रहा है आपका. Let's say your economy is growing at 5%, you are also growing at 5%. What's the point of it? The average rate is 6%. Your company is going at 5%. What's the point of investing in such a company? Growth, longevity. Longevity means for how long you are growing. Let's say you are growing at 5%. Now for 2 years due to this COVID, your company has grown by 25% for 2 years. After that again down to 5%. What's the point of it? What's the point of such a growth? Consistent compounder. This is what we are actually looking for. Asian Paints. I invested in Asian Paints when it was around 1250 in 2018 June. See where it is. कोई झमेला नहीं है, कोई headache नहीं है. Simply it has grown. Bajaj Finance, our company's founder Vasudev sir, he invested in this company in 2015 when it was around 800 rupees. See what it has done. Then around 600 rupees, he also invested in this Avenue Supermart. What it has done, look at it. This is the simple example of consistent compounder. कोई झमेला नहीं है, धीरे धीरे आराम से ये ग्रो करके निकल जाता है. Asian Paints का, if you invested in Asian Paints, forget about you guys. If I invested in Asian Paints in 2015, तो मजा आ जाता. बट नहीं किया, उस टाइम पर आइडिया नहीं था. Price is also a component कि how much fairly valued it is. But price का thing it's a bit difficult to understand कि भाई price कितने price में मिल रहा है, is it reasonable or not. मतलब valuation का side it is subjective. You may be ready to buy TCS at 4,000, someone would be ready to buy TCS at 3,500, and someone would be ready to buy at 4,500 also. चलिए
तो रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली? If you guys go through this particular report, you guys can get an idea of it. I have shared this report already. So then there, after this product portfolio and all those things about the particular company is specifically discussed, then you can come to the industry overview section. Industry overview report writing, how to write it, I have already shared. तो इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए वहाँ पे. देन यू कम टू कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटेजी. दैट मीन्स फर्स्ट आपने कंपनी के बारे में यू हैव डिस्कस्ड, देन अबाउट द इंडस्ट्री ऑल्सो यू हैव डिस्कस्ड. नाउ यू आर डिस्कसिंग द कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटेजी. If this company is going to grow and how they are going to grow their business. Otherwise देखिए, अगर कंपनी अगर स्टैगनेंट रहेगा, इसका अगर there is no growth, let's say companies like IOCL, BPCL, HPCL, this kind of companies, there is no growth in this kind of companies. People say कि भाई these companies have deep value. भाई कहाँ का deep value? If there is no growth, माने value, what is value? Value is created on the basis of your past performance. आपका last 5 years का there was सुपर बिजनेस का परफॉर्मेंस. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन योर बैलेंस शीट, ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस, ऑन योर कैश फ्लो, देयर इज सम वैल्यू. इट इज देयर. आपका दिखा रहा है किसी कंपनी का ईपीएस इज 50 एंड पीई इज लेट्स से 5. सो दैट वैल्यू वाज क्रिएटेड टिल द लास्ट क्वार्टर, राइट? इफ इट इज टीटीएम बेसिस ईपीएस, मतलब आपका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर आप ईपीएस को कंसिडर करेंगे तो वो आपका पिछले क्वार्टर तक का वैल्यू है. नेक्स्ट क्वार्टर में लेट्स से यू हैड अ ह्यूज बैड डेट, you had your some issues जहाँ पे आपका मार्केट शेयर एकदम ड्रास्टिकली लूज हो गया, तो आगे का क्या? तो ग्रोथ, दिस इज व्हाई द ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट. आपका वैल्यू तो आपका इट इज लाइक दैट. वैल्यू इज द नोन टेरेन. आपका लास्ट 5 years का जो हुआ है, द समरी ऑफ इट इज योर वैल्यू. बट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, हु नोस? So why there is a big question mark. So this is where these growth strategies and targets come in place, right? Last 5 years में it is showing कि भाई आपका EV by EBITDA है, let's say trading around 3 times EV by EBITDA पे चल रहा है. आपका प्राइस टू बुक चल रहा है, let's say आपका only 1.5 आपका प्राइस टू बुक मल्टीपल में अभी चल रहा है. आपका P मल्टीपल only let's say is around 10. आपका EPS is let's say around TTM basis पे आपका EPS चल रहा है let's say 50. It looks so lucrative, right? But it is available in such a price. Then if so many good parameters are there, let's say आपका स्टील कंपनीज में, आपका to some extent in IT कंपनीज also. But what is going to be their future? अगर फ्यूचर में अगर ये ग्रोथ नहीं करेगा तो फिर तो शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं करेगा, राइट? द सेम एग्जाम्पल ऑफ इट इज योर ITC का देखिए, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज नॉट क्लियर, सो दिस इज व्हाई द शेयर प्राइस इज नॉट गोइंग अप. सिंपल. एंड द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड टारगेट्स इज दैट, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं आपका टाटा पावर का. टाटा पावर का आप जाके लास्ट 5 years का एनालिसिस कीजिए. देयर इज नो ग्रोथ, नथिंग. बट व्हाई दिस शेयर प्राइस हैज गॉन अप फ्रॉम 30 रुपीज का लो ऑफ इन 2020. इन मार्च द लोज Tata Power's low was of 52 weeks low was of 30 rupees. 30 rupees से आज almost it has gone up till 300. I think it was last time trading around 280. इतना ग्रो किया है. मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था अराउंड 85. अभी ये यहाँ पे चल रहा है. आई इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी लॉन्ग टाइम बैक, इन 2021 में इन्वेस्ट किया था इसमें, तो अभी इतना ग्रो किया. बट लास्ट 5 years का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कीजिए, कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है. ऊपर से आपका डेट बढ़ाया है, अभी डेट का अभी रेजोल्यूशन करके आपका 1500 करोड़ रुपीज़ का इंटरेस्ट है आपका ओनली. आपका जो प्रॉफिट मैंने ये होता है ना आपका प्रॉफिट पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इफ़ यू एनालाइज दैट थिंग, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इट इज़ शोइंग मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स. बट वहाँ पे इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आ रहा है आपका 1500 करोड़ का. 1500 करोड़ का आपका ये आ रहा है आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट. उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है अराउंड ओनली 1000 करोड़ रुपीज. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी आपका आ रहा है ओनली 1000 करोड़ रुपीज, राइट? सो इन स्पाइट ऑफ दैट आपका 5 years का ट्रेंड हैज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक दिस. इन स्पाइट ऑफ दैट, व्हाई दिस शेयर प्राइस हैज गॉन अप फ्रॉम 30 रुपीज टू ऑलमोस्ट 300 रुपीज. 10 times क्यों हुआ है?
reasonably what was around the range of this Tata Power is that it was around maximum मतलब minimum 75 से इसका आपका trading range था around 75 से 125 on the higher side, मतलब maximum आपका 2018 में भी maximum it went up I think till this point 125. Was it what happened? Because of this, they are shift from their coal-based production of energies to this renewable segment. This is why investors are discounting the future earning potential of the company, है ना? तो हम लोग DCF करते हैं. Have you guys ever heard of DCF? Discounted cash flows. Discounted cash flows. Anyone? Discounted cash flows. Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Can you please explain what is this discounted cash flow thing? Why it is important? Why do we really do it? And how it is done? जितना भी आता है उतना ही बोलिए. Discounted In how cash many flow years? basically वो WACC का rate of return देख के मतलब cost of equity and cost of debt. In how many years will the cash inflows becomes equal to the cash? Yeah, yeah. Stop. एक एक करके बोलिए. Okay, sir. रिद्धि sorry. पहले आप बोलिए, then नरेंद्र आप प्लीज बोलिए. रिद्धि आप पहले बोलिए. कैश डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो मतलब वो नंबर ऑफ इयर्स का वो कैश फ्लो आएगा प्लस उसमें WACC है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट मिला के कितना रिटर्न हो रहा है एंड यू कैन सी द प्रपोर्शन ऑल्सो कि इक्विटी में कितना है डेट में कितना है उसका रेट ऑफ रिटर्न लेके. अच्छा नरेंद्र. वो रियल टाइम बेसिस पे मतलब यू विल गेट दैट अगर आज इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में कितना मतलब वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के रेट पे कितना होगा. चलिए नरेंद्र. Sir, in how कितने सालों में sir this cash inflows will become equal to the cash outflows sir? दो sir किस process से calculate करना है? This has to be suggested with the help of numericals sir. तो she to some extent is also right sir. नहीं एकदम सिंपल वे में DCF समझाइए एकदम. एक तो वर्ड्स बोल के एकदम 3-4-5 वर्ड्स बोल के आप DCF समझा दीजिए एकदम सिंपल वे में. Sir, in how many years will the cash inflows will become equal to the cash outflows? और साधारण एकदम सिंपल बच्चों जैसे वे में. ऐसा ना सर इससे साधारण तो नहीं हो सकता सर ये तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है हो सर. सकता है एकदम सिंपल. कीप इट सिंपल. जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल. Sir, cash inflows is equal to cash outflows. चलिए तो where we were एक सेकंड. हाँ भाई तो इसका फ्यूचर कैश इनफ्लो जो हो रहा है ठीक है. अभी आप बोल रहे हो कि फ्यूचर आपका कैश इनफ्लो इक्वल टू यू आर सेइंग कैश आउटफ्लो. हाँ both of you agree on it? Yes sir. नहीं if कैश इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो होगा तो फिर तो नहीं ना मतलब वो IRR नहीं एक्चुअली कैश इनफ्लो हैज टू बी मोर ना तो ही यू विल सिलेक्ट द प्रोजेक्ट. करेक्ट. अब वो Yes, आपका sir, it is correct, मेथड sir. से होएगा कि IRR मेथड से होगा. दैट इज आल्सो वन माने डिबेटेबल थिंग ना कि कौन से प्रोजेक्ट में यू सिलेक्ट द NPV मेथड एंड कौन से मेथड में यू आर सिलेक्टिंग द IRR मेथड. दैट इज आल्सो अ थिंग. हाँ Yes. हाँ मतलब टू फाइंड आउट IRR यू कैन यूज इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो और करके यू कैन फाइंड आउट IRR बट प्रोजेक्ट सिंपल वे में जाते हैं. वांट टू एकदम सिंपल वे में जाते हैं. हाँ एकदम सिंपल वे में जाते हैं भाई कि एकदम लेमैन के जैसा सोचते हैं. ठीक है. ये IRR NPV बहुत लोग दे वोंट अंडरस्टैंड. इट्स ऑल राइट एंड दैट इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. तो छोड़िए. सिंपल इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग अभी they are let's say top line is 30,000 crores and profit is only let's say 1,000 crores. ठीक है. So investors are thinking कि भाई 10 years from now they have this tie-ups with their HPCL, then they are working with this TVS group, many things renewable energy sector में they are going to do. So investors are thinking कि भाई आपका thermal power based production से आप they had plans regarding the demerger also and lifting this renewable energy segment differently also. They had this kind of plans, right? So investors are simply thinking कि भाई 5 years from now the company's top line is going to be let's say 50,000 crore rupees and they are going to pay off this debt and they are going to do some kind of changes in their capital structure and they are going to raise funds
सो ये सब करके आपका डीलेवरेजिंग करके बैलेंस शीट थोड़ा सा आपका दे आर थिंकिंग कि भाई टॉप लाइन एटलीस्ट इट वुड बिकम 50,000 crores एंड आपका बॉटम लाइन इट वुड बिकम एटलीस्ट अराउंड 5,000 crores. सिंपल वे में इतना दे आर थिंकिंग इन्वेस्टर्स की कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल वुड गो अप. दिस मच ओनली दे आर थिंकिंग ना, इजंट इट? डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट छोड़िए, सिंपली अगर सोचे, मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी का टॉप लाइन वुड ग्रो. दैट टॉप लाइन मीन्स आपका टोटल उसका जो टर्नओवर होता है, राइट, दिस दिस रेवेन्यू, हाँ दिस रेवेन्यू. पर्टिकुलर सेगमेंट टोटल इनकम. ठीक है, इसमें आप अदर इनकम ऐड भी कर सकते हो टॉप लाइन बोल के, बट अदर इनकम इज नॉट द कोर थिंग, राइट? दिस इज नॉट कोर थिंग. तो कोर इनकम क्या है? कोर इनकम तो मेरा मतलब ऑपरेटिंग इनकम तो यही है. ये तो आपका ऑपरेटिंग इनकम सर है. अदर इनकम तो नहीं इंक्लूड करेंगे ना, इवन इन एबिट कैलकुलेशन भी अदर इनकम नहीं इंक्लूड करता डेबिट है. में सिर्फ ये लेंगे, यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट होगा करके होगा, एकदम ठीक. तो आपका टॉप लाइन कोर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले रहे हैं, तो आपका यही आपका टॉप लाइन जाएगा, राइट? हाँ हाँ. बट बैंकिंग के बिजनेस में वहाँ पे अब थोड़ा जोर होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी. चलिए, तो सिंपलिस्टिक वे में वी इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग कि द टॉप लाइन ऑफ दिस कंपनी इज गोइंग टू गो अप एंड बॉटम लाइन वुड आल्सो गो अप. सो दिस इज द अर्निंग वी आर डिस्काउंटिंग इन प्राइस करंटली. अभी 300 का प्राइस चल रहा है. सिंपली वे में समझाएंगे तो अभी 300 का प्राइस चल रहा है ना. अभी नया कोई अगर ऑन द अपसाइड अगर सरप्राइज नहीं आएगा, सो दिस प्राइस वुड कंसोलिडेट इन दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली. यहीं पे आपका ये पड़ा रहेगा अभी शेयर प्राइस. एंड ओनली इफ अगर नया कोई प्रोजेक्ट आता है, नया कोई अगर आपका वैल्यूएशन में अगर कोई अगर कैटलिस्ट आता है, देन ओनली द शेयर प्राइस वुड गो अप. अदरवाइज दिस वुड कंसोलिडेट इन दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली. आपका पेज इंडस्ट्रीज में सेम केस हुआ था. वहाँ पे जब एक पर्टिकुलर एरिया में जब वो जगह स्टैगनेंट हो गया था ग्रोथ उसका अराउंड 2012, उसके बाद से जब आपका नया एक टाई अप किया था, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले वो एनालिसिस किया था, then only the price went up and then after 2015 में it touched the peak at that time. This is only the investors are discounting ना. और ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिखेगा, अगर अर्निंग विजिबिलिटी नहीं दिखेगा, तो भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे क्यों? आपका HPCL में, IOCL, BPCL में फिर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? If anyone is investing currently in BPCL, probably they have only this thing कि भाई it can become privatized, तो उससे आपका कुछ वैल्यूएशन में आपका कुछ डिफरेंसेस होएगा, रिवैल्यू होगा, कंपनी का रिवैल्यूएशन होगा. तो या दैट इज ओनली दे आर प्लेइंग ऑन. एटलीस्ट आपका इन लास्ट फ्रॉम 2019 दिस ओनली एंड ओनली थिंग वाज द कैटलिस्ट बिहाइंड दिस BPCL का इन्वेस्टमेंट. Government is going to dilute the stake and they were in talks to sell this BPCL to even the Vedanta group as well. तो वो अगर सेल हो जाता है देन ओनली कि आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंप्रूव होंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली दिस शेयर प्राइस वर गोइंग अप. तो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज एंड टारगेट्स क्या रहेंगे? यहाँ पे कैपेक्स बेस्ड यहाँ पे ग्रोथ होगा, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी. बट इफ एनी कंपनी, अच्छा व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, उसको कैसे समझेंगे? ऑर्गेनिक मतलब कि यू हैव जनरेटेड योर क्या बोलते हैं, यू हैव जनरेटेड योर प्रॉफिट, यू हैव मेड मनी फ्रॉम योर ओन बिजनेस, यू हैव दोज रिजर्व्स, नाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट फंड ओनली टू मेक द न्यू एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. आप खुद के मनी से कैपेक्स कर रहे हो या फिर आप डेट लेके भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत ठीक है चलेगा, लेवरेजिंग तो करके अब कर रहे हो, दैट इज योर ऑर्गेनिक ग्रोथ. इनऑर्गेनिक मतलब योर डूइंग एक्विजिशंस, राइट? So this company was doing acquisition like crazy. This Apple India, then आपका this gaming company Nazara Technologies, they are inorganically growing like anything. Microsoft, how they are growing right now? अभी 2 महीने पहले they took over one gaming company, right? One आपका gaming company Microsoft ने acquire किया था, that was मैंने super नजारा नहीं, गेमिंग नजारा एंड somebody else ने कुछ टाई अप किया था. हाँ, वो तो नजारा करता रहता है, टाई अप किया था एंड एक्विजिशन भी कर रहे हैं अभी. एंड आपका मैं बोल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली एक्वायर्ड वन कंपनी, मतलब अच्छा खासा एक एक्विजिशन हुआ था, वो मुझे नाम याद नहीं है, 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट. सो मतलब अच्छा था वो एक्विजिशन. फिर आपका
Even sir, one of the telecom company, I guess, Airtel has been tied with that gaming company. I guess Airtel has tied, have a tie-up with gaming company or Jio. Exactly, I don't remember. So do you mean Activision? So Activision was the one Microsoft acquired earlier. Yeah, that one I Gaming think company. is the name. वो गेमिंग कंपनी का जो एक्विजिशन हुआ ऑलमोस्ट अराउंड 2 months ago. इसका आई एम सेइंग Activision Blizzard is written sir over the internet. सर आपका लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन पे वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. एक्चुअली लिंक्डइन वाज एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इट वाज आई थिंक अराउंड 2016 और 17, याद नहीं है मुझे. दैट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड लिंक्डइन. तो दिस आर द इनऑर्गेनिक ग्रोथ्स. आपका कोर बिजनेस से अभी ग्रो नहीं हो रहा है. यू ऑलरेडी हैव योर ऑलमोस्ट योर मोनोपोली इन द मार्केट. तो हाउ यू वुड ग्रो? आप तो वर्टिकली ग्रो नहीं कर पाओगे, तो हॉरिजॉन्टल आपको ग्रोथ लाना पड़ेगा. सो दैट इज द थिंग. तो यहाँ पे दे हैव स्कोप फॉर ग्रोथ, सो दे आर ग्रोइंग ऑर्गेनिकली हियर. व्हाट इज द ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, वो सब आप लोग मेंशन कर सकते हो यहाँ पे. FY21 अंडर रिव्यू, अब पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का. नाउ व्हाइल यू गाइस विल बी डूइंग योर एनालिसिस, देन व्हिच फाइनेंशियल ईयर वुड बी अंडर योर रिव्यू. FY22 would be under review. Global scenarios, metal prices, that should be there. Raw material requirements, raw materials का साइड, एज दिस पर्टिकुलर कंपनी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन रॉ मटेरियल, राइट. तो यहाँ पे आप रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस कीजिए. एंड फॉर द बैंकिंग कंपनीज उसका रॉ मटेरियल क्या रहेगा, उसका कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, isn't it? उसका CRR, SLR, वो सब आपका लिक्विडिटी रेशियोज, वो सब यहाँ पे काम में आएगा बैंकिंग कंपनीज के लिए. IT कंपनीज के लिए क्या रहेगा, एनी आइडिया? उन लोगों का तो रॉ मटेरियल क्या होता है, सीधी सब तो एकदम इजीली समझे तो रॉ मटेरियल क्या होता है हम लोग. कुछ प्रोप्राइटरी अगर Cloud सॉफ्टवेयर based services and servers and cloud based services. हाँ, कुछ अगर प्रोप्राइटरी किसी का अगर सॉफ्टवेयर सर्विसेज लेता है, लेके अगर उससे कोई अगर वो रिफॉर्म करके अगर कोई सर्विसेज देता है, सो दोज थिंग्स, दो सब्सक्रिप्शन. देन आपका उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन उन लोगों का कॉस्ट कंपोनेंट क्या है. अगर आप एनुअल रिपोर्ट जाकर रीड करोगे तो सैलरीज, राइट. सो दैट थिंग, क्योंकि दे आर द मेकर ऑफ इट ना, दे आर द मेकर ऑफ द सॉफ्टवेयर. अच्छा, की डिमांड ड्राइवर्स एंड रेवेन्यू सेगमेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वहाँ पे, दोज थिंग्स प्लीज मेंशन देयर. सी इन FY22 product mix of the company was 72% from flat steel, 24% from long products, 4% semis, and the product mix are as follows बोल के यहाँ पे सब कुछ clearly given there. हर एक प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे आपका क्लियरली एक्सप्लेन किया है. देखिए यहाँ पे आपका 100% का बाइफोर्केशन इज गिवन देयर. यहाँ पे ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे आपका डिटेल दिया हुआ है. यहाँ वैसे आप लोग कीजिएगा. यहाँ पे ये फ्लैट प्रोडक्ट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स क्या है सर? ये आप जब सेक्टरल एनालिसिस करोगे दैट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड इट. लॉन्ग प्रोडक्ट मींस TMT बार. देन आपका ग्रिल्स बनते हैं ना, ग्रिल आपके घर में विंडो का जो ग्रिल होता है, दैट इज द लॉन्ग प्रोडक्ट. एग्जांपल ऑफ अ लॉन्ग प्रोडक्ट, मतलब दैट इज नॉट ओनली द लॉन्ग प्रोडक्ट, और भी होता है आपका लॉन्ग पाइप्स होते हैं ना, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग प्रोडक्ट. आपका रेलवे का जो क्या बोलते हैं, पटरी जो होता है रेल का, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग प्रोडक्ट. बट फ्लैट प्रोडक्ट क्या है, आपका मेटल शीट्स है. लेट्स से एस्बेस्टस शीट्स नो एस्बेस्टस आपका वो मेटल बेस्ड नहीं होता है, वो टीन का जो शीट होता है, दैट इज द फ्लैट प्रोडक्ट. अभी एस्बेस्टर बेस्ड मतलब रूफटॉप सॉल्यूशन होता है, वो टाटा स्टील का अच्छा है. वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट ना, वो टाटा स्टील के लिए अच्छा है. मतलब दे आर डूइंग दिस, माने दे आर कम्प्लीटली फोकस्ड नाउ फ्रॉम B2B से. एक्चुअली JSW वाज अर्लियर फोकस्ड ऑन B2B सेगमेंट. नाउ B2B से एक मॉडल होता है B2B, एक होता है B2C, एक होता है B2B2C, मैंने बिजनेस टू कंज्यूमर. तो टाटा स्टील इज फोकसिंग मोर ऑन B2C मतलब वहाँ पे टाटा प्रवेश बोल के एक चीज़ है, वो मेटल आपका डोर का सॉल्यूशन है, मेटल रूफटॉप सॉल्यूशन है, आपका मेटल पंप से रिलेटेड वहाँ पे सॉल्यूशंस है. सो दो सेगमेंट्स आते हैं. आपने जो बोला कि रूफटॉप का दैट थिंग यू मेंशन. सो या टीन शीट्स अभी चल रहा है आपका, मेटल शीट्स जो आपका घर के लिए, जो पहले जो एस्बेस्टस शीट्स होता था, दैट इज द फ्लैट प्रोडक्ट्स थिंग.
अरे यार बाद में फोन करो। हाँ, फिर आपका कार की मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका फ्लैट प्रोडक्ट्स यूज होता है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फ्लैट प्रोडक्ट्स, राइट। फिर आपका ट्रेन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, रेलवेज का आपका जो बॉडी जो बिल्ड होता है, रेलवे आपका जो कोचेस का, राइट, तो वो Right. फ्लैट प्रोडक्ट से बिल्ड होता है ना। दो थिंग्स, आपका फैक्ट्री शेड होता है, वहाँ पे एस्बेस्टस चलेगा ही नहीं, वहाँ पे आपका मेटल शीट ही लगेगा। दो थिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ फ्लैट प्रोडक्ट्स। और भी बहुत सारे हैं, उसको वहाँ पे कस्टमाइज भी किया जाता है। नॉट दिस कंपनीज डू नॉट डू दोज काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन जनरली, बट हाँ, टाटा स्टील इज लुकिंग एट दोज थिंग्स। जेएसडब्ल्यू अभी उतना ज़्यादा नहीं करता है। टीएमटी बार्स जो होते हैं, आप जानते हो, टीएमटी बार्स ऐसे नहीं होते, जब फैक्ट्री से आता है वो ऐसे शेप में मिलता है, यू शेप में। क्यों? क्योंकि आपका ये लॉन्ग प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपका ओनली दिस काइंड ऑफ होगा तो आपका माने हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगा। ऐसे करके आपका पूरा बंच होता है 1-1 टन का। अगर आपने कभी मतलब घर बनाने का वैसा कुछ अगर काम किया होगा आपने, एटलीस्ट खुद के घर के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी वैसा कुछ काम किया था, तो वो आपका टन के हिसाब से आता है, ठीक है। दैट इज द लॉन्ग प्रोडक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या था, की डिमांड ड्राइवर्स एंड रेवेन्यू सेगमेंट। किसी भी बिजनेस में भाई आपका की डिमांड ड्राइवर्स क्या है, आपका प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा, क्यों बिक रहा है भाई, वो एनालिसिस कीजिए। रेवेन्यू सेगमेंट का आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। आपका की डिमांड ड्राइवर्स मतलब कैसे समझाए, की डिमांड ड्राइवर फॉर एवेन्यू सुपरमार्ट क्या होता है, डीमार्ट का डिमांड ड्राइवर क्या है, डीमार्ट का Low prices. लो प्राइसेस एंड सर लो प्राइसेस। अच्छा, लो प्राइसेस क्यों देते हैं, कैसे दे पाते हैं, एक्सप्लेन। लो प्राइसेस बोल तो देता है भाई सस्ते में बेचता है, कैसे बेचता है? So they paid in bulk. That's why they are able Definitely, economies of to scale. sell it in low prices. इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड सोचिए, थिंक कीजिए। अभी आई एम जस्ट सेइंग ओनली फ्यू कैंडिडेट्स आर कंट्रीब्यूटिंग, दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस थिंग्स। बाकी लोग क्या कर रहे हो? इट्स ओके रीति, विल गेट द बैकअप ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। हाँ, बाकी बोलिए, बाकी लोग। So innovative supply chain by the companies which are already supplying this from डेटर्स global. टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बोल के कुछ सुना है कभी? Yes, sir. So creditor days, debtor days, माने receivable days, payable days बोल के, have you heard anything Yes, sir. like that? Yes, sir. तो payable days मतलब क्या? आप कितने दिनों में पैसे दोगे? Yes, sir. तो वो आपका payable days डिमांड का कितना है? कितने दिन में in how many days they are paying the money back to the creditors? So You know how much it is for this Reliance Retail? 30 to 45 days. डिमार्ट का 1 to 2 days, समटाइम्स आपका ऑन स्पॉट पेमेंट कैश में। उल्टा दे वुड चार्ज, दे वुड आस्क फॉर मैंने कैश डिस्काउंट कि भाई अभी पेमेंट कर रहा हूँ, कैश में पेमेंट कर रहा हूँ भाई, और कैश डिस्काउंट दे दो। एंड हाउ मच इट इज़ फॉर फ्यूचर रिटेल? स्पेंसर्स का है अराउंड 65 days. हाउ मच इट इज़ फॉर फ्यूचर रिटेल, डू यू नो? फ्यूचर रिटेल का बिग बाजार कितना है, गेस कीजिए। एनी गेस? बोलो बोलो। पेमेंट ही नहीं करता है, लटका हुआ है सब, केस चल रहा है कोर्ट पे, पेमेंट छोड़ दो भाई। पहले Yes, sir. 30 days, then it became 45, 60, 75, 90, अभी तो पेमेंट ही नहीं हो रहा है। कैसे रहो आप? That is their strategy ना। अच्छा, annual performance of the company in FY21 ongoing and new projects, उसके बारे में you must mention। Debt profile of the company, ongoing project का updates, new project का updates, update on key merger and acquisitions,
performance of major subsidiaries, international subsidiaries, joint ventures. Then you can come to key क्या बोलते हैं आपका shareholders, shareholding pattern, and in that your key shareholder key institutional holdings. Then financial highlights, you can come to this also. Financial highlights में it is mentioned few things are definitely there, but यहाँ पे you should also be mentioning 5 years CAGR of this kind of things कि आपका EPS का 5 years आपका trend analysis करना होगा यहाँ पे. I'm writing it here for you guys. So, sir, what should be the exact level of all these parameters, sir? EPS, non-debt to equity ratio for any particular industry or a sector, sir? Depends on the particular industry. Depends on the particular industry. Sir, for instance, if we talk about steel industry, what should be its level, sir? Debt equity? Minimum or for instance, sir, if we talk about the steel industry itself, what should be the level of these parameters exactly? Any particular limit or minimum or max is there? Debt equity ratio का? Sir, for the steel industry, what should be the level of these financial ratios, sir? EPS, net debt to equity ratio, any minimum or maximum is there, or just keep on changing on its own? Keep on changing. Always these things keep on changing. आप बोलोगे कि current asset आपका होना चाहिए optimal 2:1, right? It is set in our accounting books. We have already always studied कि 2:1 होना चाहिए आपका current assets by current liabilities, right? Current ratio पे only let us discuss now. Current assets and current liabilities. तो वहाँ पे आपका current assets में if there is higher inventory build up, तो वहाँ पे आपका ratio हो जाएगा 3:1, right? So that thing also you should be considering. वहाँ पे आपका हर एक ratio का only देख के नहीं चलेगा. यहाँ पे actually these ratios that I have built ना, I have actually made these ratios. I have actually calculated these ratios. I haven't copy pasted these ratios over here. यहाँ पे I have actually calculated and actually understood कि what is happening behind these numbers. आपको वो करने होंगे खुद से. Current ratios आपका यहाँ पे है 0.83, right? तो आपके पास sufficient current assets तो नहीं है, तो वहाँ पे आपका तो फिर आपका working capital में आपका वहाँ पे तो problem हो सकता है, right? That is also one concern. वो सब कुछ बैलेंस करके आपको देखना होगा, पूरा आपको ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देखना होगा. अच्छा, like that you can get the numbers here. Then GSW Steel production and delivery statistics यहाँ पे last 5 years का is given here. Then government's focus on the industry. This is very very important. Government का focus क्या है उस particular industry में? You have to mention those things. Then your demand outlook and entire industry का outlook. Then key managerial people. ये analyzing this particular thing, key managerial people is very difficult. Management का analysis is very difficult. अभी we are not going to do this in our particular this curriculum. तो बस यहाँ पे नाम लिख के छोड़ दीजिए. Key managerial people ये although this is the most important thing, but अभी मत कीजिए कुछ. It takes a lot to understand this thing. It takes a lot to understand कि भाई who is this person, what is her history, who is this person, what is his credentials, ये आदमी है क्या, कैसा है. Understanding of this particular thing is very difficult. And he is Mr. Sajjan Jindal, right? And his brother, he is the founder of owner of this company Jindal Steel and Power. But दोनों में ज़मीन आसमान का थोड़ा फर्क है, corporate governance में at least. Sajjan Jindal is also the chairman of World Steel Association, and this Navin Jindal थोड़ा लोचा है इसमें. At least on Dalal Street, people say. Okay. All right, sir. That was all from my side. You guys have any doubt? So how many page of write-up the research report should be? Myself, please mute. किसके पीछे गाना बज रहा है?
Sir, what is the exact outcome which we can expect from this internship, sir? In a deal. इसके लिए फ़ोन कीजिए, आप तो कल ही ज्वाइन हुए हैं, राइट? ठीक है सर, ओके सर, राइट। What is the expected outcome of from this internship is that if you do it perfectly, whatever. अच्छा, hey, we had another thing I forgot to teach you guys. अच्छा, I will teach another thing. वो करना होगा आप लोगों को. अच्छा, हाँ, what is the expected outcome is that if you let's say MBA finance from a good college, इस internships को अगर आप ठीक से if you utilize this thing, if you properly learn, at least इक्विटी रिसर्च के डोमेन में जॉब मिलना वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. एंड नॉट ओनली मतलब कि 6 वीक्स का इंटर्नशिप हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट अ जॉब. नो, वट एवर यू विल बी लर्निंग आफ्टर दैट इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स, मतलब यू विल बी लर्निंग स्टील सेक्टर इन एंड आउट, बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो विल बी लर्निंग वेरी वेल. बट वट अबाउट अदर सेक्टर्स? अदर सेक्टर का क्या हो? बाकी लेट्स से IT सेक्टर है, देयर इज अ वैकेंसी इन एनी कंपनी, लेट्स से इन क्रिसिल. Regarding the TMT sector, that is telecom, media and telecommunication sector, there is a vacancy. You won't get the job there because you do not have any idea of it. So you have to do the analysis of your own. I am not an telecom sector analyst, but थोड़ा बहुत understanding है मेरा. IT का I am not an IT analyst. Becoming a particular sector analyst, it takes a lot. मतलब if you go on LinkedIn and at least LinkedIn का छोड़िए. If you read this kind of research reports, not this, yeah, this kind of research report. So whoever has made this report, matlab that person is a genius. Okay, although not much of genius has been shown here, not much of the genius has been displayed over here in this report, but still the understanding of that person is heavenly for me. तो भाई एक सेक्टर में 3-4 साल तो निकल जाता ही है. मेटल्स में नॉट ओनली स्टील किसी को ओनली एलोकेट नहीं किया जाता है. एंटायर मेटल पैक इज एलोकेटेड टू 1% मैंने लार्ज कंपनीज. तो एक सेक्टर को मास्टरी करने का 2 years तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. तो आपको क्या फ़ायदा होगा? 6 weeks सीखने से जॉब मिलने में हेल्प होगा. एक्चुअली वन पर्सन कॉल्ड अविनाश, Avinash Sarath, so he is also doing his CFA level 1. He has got a job in Morningstar in the equity research domain, and he didn't have any prior experience of it, but he is doing CFA level 1 and he is an excellent candidate, so he has got a job. I am not taking a credit of it. We have candidates who have got placed in, we haven't placed anyone. He was CA qualified chartered accountant plus CFA level 2 qualified, so he has got job in Morgan Stanley. And after doing the internship, after the interview, when he got the job, he came back and he said, I'm not taking credit. I'm not saying कि भाई यहाँ से internship किया तो ही जाके इनका लगा, नहीं, definitely not. It's completely his work, but he said कि भाई हाँ interview में थोड़ा help हुआ था उनको. So I do not know how far true is that, but he is saying it. तो चलो, that's the thing. हेल्प तो होता है, डेफिनेटली हेल्प होता है. सर आई एम एन MBA फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ सर, और सर कौन सी एडवांस सर्टिफिकेशन ले सकता हूँ सर, या फिर कौन से कोई कैन यू रिकमेंड सर एनीथिंग सर फॉर गेटिंग ए जॉब इन दिस कंपनीज लाइक यू टॉक्ड अबाउट सर? हाँ, इन दैट केस फाइनेंशियल मॉडलिंग अच्छे से सीखना होगा. इक्विटी रिसर्च सिर्फ ओनली दिस मच आपका 6 weeks का सीखने से नहीं होगा, और सीखना होगा, खुद से प्रैक्टिस करना होगा. एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अ मस्ट. तो सर फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए सर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए सर, और विच पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सर की नॉलेज होनी चाहिए सर? कुछ नहीं चाहिए. किसने बोला ये? बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिजनेस समझना आना चाहिए. ओके सर. धंधा समझते हो, एक बिजनेस कैसे कमाते हैं वो समझते हो, दैट्स ऑल. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू गाइस. प्लीज लर्न दिस थिंग एंड यू गाइस हैव टू डू इट. अच्छा, just search this thing, BSc result calendar on Google. Okay, everyone.
Okay, sir. I'm doing, sir. Everyone. What about all? Ashwini, Aditya, Gayatri, हाँ जी सर, ओपन कर दिया सर. Noel, Prachi, Pratik, Trianjali. Yes, sir. Security code, security name and result है sir. Stop, Narendra. Stop. Okay. Others? We are doing, sir. चलिए, good. तो just Google this thing, BSE result calendar. Okay, the first link is www.bscindia.com. Click on this link. Then let this page open up. Result calendar, forthcoming results, right? Now, Right, ये sir. क्या है? Yes, sir. भाई, you want to, let's say you are interested in, let's say TCS, but TCS का result कब आएगा? 11th of April को. How do I know? Because it is written over here. Let me show you. Yeah, TCS written over here, 11th of April. I actually opened this website yesterday also during the session, so I know 11th of April ko they have their results, right? Now let's say you are interested in Infosys का result कब आएगा? I do not know, right? I am interested in, let's say, Infosys, and I do not know when this company is going to declare their result. So in this search bar, enter security name, submit. तो यहाँ पे enter कीजिए Infosys Limited. देखते हैं, let's see. Yeah, Infosys is going to declare their result on 13th of April, right? Infi, 13th Yes, of sir. April. April. Now, what is the purpose of it? Why we are doing it? What's the point of it, right? There is a huge point of it. If you work in any, let's say, proprietary trading firm or any brokerage houses, they are in those kind, actually in all the companies, they do this thing. This is very important now. So there is one component that last, yesterday's session I talked about, is that ongoing review. So for doing the ongoing review, we should know when this company is going to declare their results. So let me just show you. What you have to do is ticker means मतलब कैसे समझें? Symbol, sir. Symbol. Yes, correct. It is Short form trading. of this company's name, Infosys Limited, Tata Consultancy Limited. इतना कौन लिखेगा? TCS, that is the ticker. And not only the short form, but utilizing this code, you can actually get this kind of money. You can fetch the data of the company as well, right? So Infosys का result है 13th of April को. So one purpose is understood कि भाई from this website we can understand, we can get to know कि when a particular company is going to disclose their result. अच्छा, let's say I want to find out, let's say I am interested in those companies who are going to declare their result in next 5 days from now. तो भाई from date आप अगर आज का यहाँ पे ऐड करोगे 10th of April को, एंड आज से 5 दिन तक, लेट्स से यू वांट टू गेट द रिजल्ट. अच्छा चलिए, आपको 15th of April तक का आपको कंपनीज कौन से कंपनीज है जो कि 10 से 15 के बीच में रिजल्ट दे आर गोइंग टू डिक्लेयर, राइट? पुट द डेट, फ्रॉम डेट है आपका 10th टू डेट 15th. जस्ट डू सबमिट, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ इट. यू हैव गॉट द लिस्ट, राइट? नाउ what you guys have to do, let me just show. Please open another tab and search money control. Okay, sir. Search money control on another new tab. इसमें एंट्री कीजिए, just click on the link. अच्छा, in this BSc result calendar you can see that if you just scroll down, hundreds of companies names is mentioned over here, and till 30th of May it is given here, right? Yes, sir. Right, sir. We are interested in two kinds of companies. Number one, companies having market cap of more than 5,000 crores, that is
टिकर यहाँ पे आप लिखेंगे लेट्स से लाइक दिस TCS and R date रिजल्ट का डेट and O यहाँ पे that is the मैंने तो मेन क्राइटेरिया so result date is 11th April 2022 and FNO, yes it is in FNO. Like that you have to make a list of the stock and the basic criteria is that it has to be what the market cap should be greater than 5,000 crores. Greater than 5,000 crores, right? So greater than 5,000 crores. Yeah, this is all criteria. This is the basic criteria. मतलब ये होना ही चाहिए. So let's say अब ये कहाँ से इतना कुछ we will be checking. I do not think that this company's market cap is more than 5,000 crores, but I can be wrong, right? So just how to do it very simply by cursor को इसके ऊपर लाइए, double click, Control C, copy up to money control. Come here. सर्च कोड्स न्यूज़ म्यूचुअल फंड्स NAVs यहाँ पे क्लिक कीजिए कंट्रोल V जस्ट टू कंट्रोल V कंट्रोल C in order to copy the data control V in order to paste the data. अच्छा now when you are here so on the left side of it you can see quotes mutual fund commodities future and options right future and option is this visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Visuals. Yes, Click sir. on it. Click on it. Simply click on it. अच्छा my internet is too slow. As always, yeah. So future and option, there it is showing no result available, right? First click on quotes. First click on FNO, future and options, double check so that you do not miss anything. Then again click on quote, just check this company's market cap now. Just click on this company's name, so it would open up like that. You can see all these things are given over here. Just scroll down a bit. Then you can see market cap is MKTCAP rupees crores. This is the market cap rupees 100 crores. So we are not going to consider this company. Second one is Birla Tires. It is a large company. Control C. See what I have done. These are the shortcuts of working. Just double click on it. So entire thing is selected. Control C. Come to money control. Scroll up. On it. My internet is slow तो थोड़ा टाइम लग जाएगा. Just click on this particular search code and news bar. Control V paste हो गया. Codes में there is Birla Tires. You can see the ticker is given here. Codes are given here. अच्छा click on future and option. It is in FNO definitely. Should be at least. Let me check. It's not an FNO. That's right. Again, click on quotes. Okay. This is not an FNO. So we have double checked it. Now let's check the market cap. Market cap is 343 crores. We're not going to consider Delta Corp. FNO में भी है and आपका इसमें भी है 5,000 crores से तो है ज़्यादा. Plus I think it is also in FNO. Let me check. So sir, rather than going back and forth, जैसे हम सर पहले जा रहे हैं सर F&O में, उसके बाद सर ऊपर जा रहे हैं, तो सर ये कंटिन्यू करने के बाद ही हमें क्लिक करना सर? सर जैसे आप कर रहे हो सर F&O सर नो रिजल्ट अवेलेबल, देन उसके बाद कोर्ट में जाके उसके बाद फिर F&O, उसके बाद फिर कोर्ट में, उसके बाद सर कोर्ट में जाके उस पर क्लिक करके इस पे बिरला टायर शेयर प्राइस की वेबसाइट पे जाके मार्केट कैप चेक कर रहे हैं सर जैसे नीचे की हो, तो ये प्रोसेस है. ओके सर.
ओके सर। मतलब whatever works best for you. What I am doing कि भाई यहाँ पे टिकर का नाम ऐड किया, कोर्स में दिख रहा है, इसका नाम दिखा रहा है, क्लिकिंग ऑन तो सर इसमें यहाँ पे हमें दिखा दिया। फ्यूचर सर ऑप्शंस में जाने की बजाय सर कोर्स में डायरेक्ट जाके और उसमें जो ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक करके नहीं हो सकता सर, कि फ्यूचर नहीं, ऑप्शन देखिए पे ही जाना होता है पड़ेगा तो पहले कीजिए, से? नो प्रॉब्लम, नो ओके प्रॉब्लम। सर। मैं ओके एक्चुअली ऐसे करता हूँ, मेरे को ये इजी लगता है इसलिए मैं ये ऐसे करता हूँ। मैंने भी देखा नहीं यार, एंड आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एफ, तो मुझे तो एफ का एफ भी नहीं पता। So see, I have clicked on FNO and it has opened up. Now how to understand this company is in FNO? The shares you can trade on FNO. See, Delta Corp आपका 28 अप्रैल 2022 का डेट है. Option, call, strike, so many things are there, right? Call, strike, put, like that. This kind of things would be written there. And अगर ये नहीं होगा FNO में, तो ये आपका simply it would show कि भाई no results available. So this thing is in future and options, right? You can again click on quote. Again click on FNO to double check it. That means this company is in FNO. तो यहाँ पे it is selected already, तो कंट्रोल C कीजिए, ऑल्ट टैप करेंगे तो आपका एक्सेल शीट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, कंट्रोल V कीजिए, पेस्ट हो जाएगा। रिजल्ट डेट, व्हाट इज द रिजल्ट डेट ऑफ इट? इट इज 11th of April 2022। कंट्रोल C कीजिए, ऑल्ट टैप कीजिए, एक्सेल में जाएगा, कंट्रोल V कीजिए, आपका डेट हो गया, FNO में है, डेफिनेटली है, यस। सर ओनली सर जो कंपनी एफएनओ में है उन्हीं का मार्केट कैप इज ग्रेटर देन 5000 करोड़? नहीं, जो आपका एफएनओ में नहीं है उसका भी तो 5000 करोड़ के से ज़्यादा होगा। एफएल का ज़्यादा है, आपका रूट मोबाइल का ज़्यादा है, तो उनको भी इंक्लूड कीजिए। 5000 करोड़ से ज़्यादा कंडीशन इज, वी हैव टू कंडीशंस, मतलब एक्चुअली वी हैव वन कंडीशन, मार्केट कैप ग्रेटर देन 5000 करोड़ का कंपनी वी वुड लिस्ट डाउन हियर, एंड इफ इट इज इन एफएनओ वी वुड राइट यस। लेट मी जस्ट गिव यू few more examples. So, What is the objective of this activity? Just want to know whether this on which security we can research if it is 5,000 crores above. no, this list is what is the purpose of it? Yes, yes. मॉडलिंग कर रहे हैं इसमें और No, this मेन is just for ऑब्जेक्टिव our own tracking. This is actually just for our own tracking in our own company. That's all. And these are the thing ना, माने if you get a job in any equity research company, especially माने अगर आपका कोई क्या बोलते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फार्म है, तो फर्स्ट डे वन का जॉब, दिस इज द डे वन फॉर वर्क। दे वुड टेल यू टू गो एंड मेक अ रिजल्ट कैलेंडर, दैट इज द डे वन जॉब। बट सर दिस वीडियो इज आल्सो अवेलेबल ऑन सर कंपनी की जो वेबसाइट है, YouTube चैनल। हम लोगों का यूट्यूब चैनल, तो सर आपकी कंपनी का YouTube चैनल है, उस पे भी सर इस चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है सर, इसके we रिगार्डिंग are वीडियो going to है। upload this today's session there. ओके सर, श्योर श्योर सर। So let me just show you a few more examples. और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा कितना रोल प्ले करेगा और इट इज ओनली नथिंग? लोग बस अभी इसको लिस्ट आप कीजिए, इसको बाद में समझाएंगे आपको बाद में। दिस इज ऑल्सो इन एफएनओ। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वन कंपनी which is not in FNO but market cap more than 5000 crores. I think it should be, let me check. Yeah, this Mastic, iska I think the market cap should be more than 5000 crores. Let me check. सर टोक्यो Market cap is 9500 crores, right? ओके सर, राइट सर। So you just copy the ticker once again, alt tab, you come to this thing, control V, Mastic, come to the result date 19th of April को they have their result, control C copy करिए, control V paste कीजिए, that's all the job is। FNO में है? No, it is not in FNO। This is the work for the next 1 week। आप लोगों को what you guys have to do is that you guys have to make equity research report। Let me take a photo।
सर सीएफए लेवल 1 की सर प्रिपरेशन एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट को करने का सर बेनिफिट है? अगर मैं सीएफए लेवल 1 की प्रिपरेशन करूं सर, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा सर? आपका करियर गोल क्या है, क्या करना है आपको? सर वैसे तो सर मैं टीचिंग करता हूँ सर, ऑनलाइन टीचिंग, पर सर मेरा फाइनेंस में गोल है सर। फाइनेंस में सर इक्विटी रिसर्च करना चाहता हूँ सर, इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ सर, फाइनेंस में लॉन्ग टर्म क्या करियर। सिखाते हो? टीचिंग में सर मैं बेसिकली इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर, +2 तक सर। तो सर फुल टाइम जॉब है वैसे, मतलब कि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सर, ज़्यादा इंटरेस्ट फाइनेंस की फील्ड में है सर। इक्विटी रिसर्च, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्हीं में जाना चाहता हूँ सर। तो सर सीएफए लेवल का क्या बेनिफिट मिलेगा सर सीएफए मुझे? करना चाहिए था एमबीए में, फिर आप आई क्यों? आपको सीएफए कर लेते आपका काम हो जाता। तो सर सीएफए का क्या बेनिफिट मिलेगा और इसकी टेस्ट फीस कितनी होगी और कैसे प्रिपरेशन करूँगा डिटेल में सर? सीएफए का 3 लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का आपका फीस होता है आई थिंक $450 फॉर द रजिस्ट्रेशन, एंड एग्जामिनेशन फीस होता है आपका एक होता है अर्ली बर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है आपका लेट। तो जो अर्ली होता है उसमें आपका आई थिंक इट इज़ अराउंड वही होगा आपका ऑलमोस्ट लाइक 50,000 का पड़ेगा एग्ज़ाम फीस, ठीक है। अर्ली ठीक का, है। स्टैंडर्ड का होगा 70, लेट का होगा ऑलमोस्ट 1 लाख। और सर ओवरऑल फीस कितनी होगी सर सीएफए लेवल 1, 2 और 3 की सर? तीनों का डिपेंड हाँ जी करता सर, है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में हो जाएगा इंस्टीट्यूट का, एंड ट्यूशन का डिपेंड करता है कहाँ से ले रहे हैं। ओके सर। और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा सर अगर सीए लेवल क्लियर हो जाता है सर? बहुत बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं। इक्विटी रिसर्च में एमबीए का क्या है, एमबीए का क्या है? एमबीए अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बट सीएफए स्पेशलाइजेशन नहीं है सर, ठीक है सर। सीएफए स्पेशलाइजेशन, ठीक है। बट सीएफए में अभी जस्ट डोंट जंप इनटू इट। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सीएफए, आई हैव कंटेंट ऑफ सीएफए, मतलब सीएफए के बुक्स मेरे पास है, इंस्टीट्यूट की बुक्स है। ऑलराइट, सीएफए लेवल 1, लेवल 2 के बुक्स ऑलरेडी आई हैव गॉट। सीएफए लेवल 1 के बुक आप देखिए, खुद से थोड़ा बहुत देखिए, पढ़िए, एंड एक्चुअली इन आवर प्रीवियस बैचेस ना, तो कुछ स्टूडेंट है जो कि सीएफए के बारे में देवर से तो इनको क्या चाहिए, तो प्रोबेबली मतलब हम लोग भी कुछ क्लासेस ले सकते हैं। एटलीस्ट मैं कुछ क्लासेस आई थिंक लूँगा सीएफए का, मतलब वही स्टूडेंट्स का। ठीक है सर, मैं इंटरेस्ट सर, जब आप क्लास स्टार्ट करोगे तो बता दीजिएगा सर। मई से पहले नहीं होगा, अभी बहुत काम है एक्चुअली फाइनेंशियल मॉडलिंग का। एक्चुअली वी हैव मेड आवर वेबसाइट ना, तो वहाँ पे अच्छा रुकिए, ये अभी रिकॉर्डिंग बंद कर